स्वागत अभिवादन कर रहे हैं निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद। Warm smiles, warm greetings. And as the hosts lead the President-elect towards the President's study, joy writ large on every face. A special moment for everyone here. 5 वर्षों तक निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आधिकारिक निवास रहा राष्ट्रपति भवन, और आज से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आधिकारिक निवास होगा ये राष्ट्रपति भवन। संसद भवन जाने से पहले उनका औपचारिक स्वागत, राष्ट्रपति भवन में उनका आगमन हुआ है। And as President Kovind will bid adieu to his office and makes way for Srimati Murmu, we witness another core component of democracy, that change is the only constant, and graceful transitions ensure seamless continuity. The office of the President of India has a dignity, decorum and gravitas that President Ramnath Kovind, ready, awaiting the arrival at this majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan of the President and the President-elect. Srimati Draupadi Murmu's coming into Rashtrapati Bhavan as India's 15th President will strengthen the grassroots connect of the country's highest office with those who give democracy its strength, India's people, in not only big towns and cities, but in villages and far-flung areas that are seldom heard of, seen or even thought of, but hold us together as a nation, silently, strictly, and with muted expectations. There are countless stories there of humble beginnings and humble ends, but all teaching us that value of endurance, tolerance, toil, and pragmatism. And one such story today, one with humble beginnings as a village headman's daughter and granddaughter, moving on to head the largest democracy in the world as its constitutional head. Her story, of course, is inspiring, but the Santhal tribe she hails from has a long history of fighting the British, fighting injustice and fighting with honor. Patriotism runs in their blood, and they epitomize the line, if you believe in something, then fight for it. Simple things make strong statements. संथाल आदिवासी, संथाल जिन्हें कहा जाता है शांत व्यक्ति, ऐसे हैं ये संथाल आदिवासी, और उसी समुदाय से हैं हमारे देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन, उसके सामने रायसीना पहाड़ी से नीचे की ओर विजय चौक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वास्तुकला का एक शानदार नमूना। विजय चौक से भव्य राष्ट्रपति भवन, जिसके एक ओर नॉर्थ ब्लॉक और दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक। और ये दृश्य खास मौकों पर हम सब देखते हैं। आज ऐसा ही विशेष अवसर है, और यहाँ निवर्तमान राष्ट्रपति के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अब कुछ ही समय में यहाँ से राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अग्रसर हैं। वहाँ से वो प्रस्थान करेंगी माननीय राष्ट्रपति जी की साथ संसद के केंद्रीय कक्ष की ओर। Specially placed cameras giving you an inside view of the galleries of Rashtrapati Bhavan. Interesting to know that there are 2.5 kilometers of corridors
in Rashtrapati Bhavan. सामने पलम। In architecture, material influences the expression royal, regal, splendid without being overbearing or overwhelming. The sandstone pink and cream combination used gives a feeling of space and dimension, new meaning, beautifully synced together, keeping Delhi's climate in mind. We are very blessed to have a lovely light breeze blowing here in the national capital. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। जनरल सल्यूट अध्यापक। प्रांगण में समारोहिक और औपचारिक गतिविधियां जारी हैं। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, राष्ट्रपति भवन में कुल 227 खंबे हैं और इसका प्रांगण अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का है। मुख्य द्वार से भीतर तक दोनों ओर हरियाली और नहर है, फव्वारे हैं और यहां प्रांगण की लाल बजरी कालीन की तरह चमकती हुई लगती है। राष्ट्रपति अंगरक्षक बाजू पलम। बैठ विश्राम। प्रांगण के ठीक सामने जो गुंबद है वही दरबार हॉल का गुंबद, जो दूर से ही राष्ट्रपति भवन की पहचान। बलुआ पत्थर के बने खंभों के ऊपर चारों कोनों पर घंटियों को उकेरा गया है और भव्य और शानदार इमारत राष्ट्रपति भवन, देश के प्रथम नागरिक का आधिकारिक निवास। The work of democracy is hard, the progress of democracy is uneven, and the only path of democracy is through inclusion. Today we walk the talk of inclusion, diversity, and possibilities. As Srimati Draupadi Murmu will take oath as India's 15th President. As the first tribal woman president of India, Srimati Murmu has not only made her family, her tribe or her well-wishers proud, she's ensured that every Indian's heart, irrespective of origin or background, beats to the tune of the uplifting rhythm of pride, applause and joy. We belong to a country that breaks stereotypes, that raises eyebrows in surprise, and that believes in raising the bar for innovating, adapting, and coping. बहुत सी बातें जो लोगों को आश्चर्य में डाल सकती हैं, लोगों को अविश्वसनीय लगे, भारतीय लोकतंत्र ऐसा करता रहता है और जिसमें ताजा उदाहरण हमारे देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का है। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली और उसके बाद देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचकर उन्होंने करोड़ों करोड़ों मन को प्रेरित किया है और भविष्य में यह संदेश भी दिया है उन्होंने कि संघर्षों से जूझना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है। The President's bodyguard here, their commandant, Colonel Anup Tiwari, the second in command, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav. राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी।
सबसे पहले इसे द गार्ड ऑफ मुगल्स कहा गया था, लेकिन बाद में इसे अनेक नाम दिए गए। इस रेजिमेंट का गठन एक विशिष्ट घुड़सवार यूनिट के रूप में हुआ। स्वतंत्रता के बाद कई बार राष्ट्रपति अंगरक्षक ने अनेक युद्ध में अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। राष्ट्रपति अंगरक्षक के सैनिक समारोहिक औपचारिकताओं में दक्ष हैं। वे प्रशिक्षित घुड़सवार और कुशल टैंक चालक भी हैं। The president's bodyguard on magnificent dark bay and bay-colored mounts. And in fact, the guards are riding steeds that are the tallest held by any mounted unit in the country, at a minimum of 15.5 hands. And these magnificent horses are very well looked after by the 44 Military Veterinary Hospital. A unique, distinct regiment. The personnel are handpicked, all of them at least 6 feet tall. And of course, besides performing ceremonial duties for the president, the officers and men of the bodyguards are trained horsemen, paratroopers and tanksmen. Chushul in 1962, in the Western Theatre in 1965, and in Operation Pavan in Sri Lanka in 1988. They've all seen action there. The flag fluttering high, indicating that the president is in Rashtrapati Bhavan, in residence. Equality, freedom, justice, pluralism, tolerance, respect, participation. The list of values that a democracy stands for include that which has been stated by earlier generations and also those which evolve as time goes by. To keep up with the times, to yet bring in tradition so that the past and the future are connected by the present. That is a legacy we leave behind. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का जीवन महिलाओं और बालिकाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। ज्यादातर समाजों में हमने देखा है कि लिंग भेद होता है, बेटा बेटी में भेद किया जाता है और ऐसे में बालिकाओं के सामने, महिलाओं के सामने संघर्ष और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने बालिका विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को बचाओ और इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई की उड़ान योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त या राज सहायता प्राप्त शिक्षा, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रेरित करने की राष्ट्रीय योजना। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो ये कि जितने भी अवसर हैं उसमें कहीं कोई भेदभाव ना हो, समानता हो, लड़कों के बराबर उन्हें भी आगे बढ़ने के वो सभी अवसर प्राप्त हों और ये सुनिश्चित हो घर से। वो समाज जब भेद नहीं करता, जब बेटा और बेटी समान हैं, तब वो समाज पूरी तरह से विकसित होता है, विकास करता है। ये ऐसी कहानियां हैं जो प्रेरणादायी हैं और जिनकी मिसालें आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। In a short while from now, we shall see the arrival here at the forecourt of the President, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect, Srimati Draupadi Murmu.
As the constitutional head of the country, the president is de facto also the first citizen of India, playing a significant role of the head of state of India. The president is also the supreme commander of the three Indian armed forces. It is laid down in our constitution that the president has the responsibility and the authority to accord with, to defend and protect the constitution and its rule of law. The constitution, which is the basis of our democracy. The constitution which shows us the way whenever we tend to get lost. The constitution which ensures the values of dignity for all, equality, equity, brotherhood, fraternity, and justice. राष्ट्रपति अंगरक्षक मुस्तैद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दरबार हॉल के सामने, ये प्रांगण की मुख्य सीढ़ियां, और अब से कुछ देर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति दोनों यहां पधारेंगे। उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा और फिर वो प्रस्थान करेंगे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर। ये दृश्य राष्ट्रपति भवन की ओर से, और यहां दरबार हॉल में निवर्तमान राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति Information, an informal procession. The President of India, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect of India, Srimati Draupadi Murmu, going past and through the Darbal Hall. Under the shadow of Lord Buddha, 5th century BC Gupta period style. The dignitaries moving towards the dais for the national salute. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा, राष्ट्रीय सैल्यूट, पदक।
President Ramnath Kovind sitting in his vehicle, and accompanying him, the President-elect